So next topic physics का. So today's topic linear momentum. Linear momentum. Momentum. Then Newton's second law. Newton's second and third law. Third law. And law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. This is L8. Okay. So linear momentum, Newton's second and third law, and law of conservation of linear momentum. Okay. So in this topic, first we want to explain about linear momentum. So linear momentum, first we want to explain about linear momentum. Just before introducing this linear momentum, I will explain 2 points to you. One is, for example, a boy throws a ball to another boy, just throws the ball for catching purpose. Then what happened? Another boy can hold the ball easily without any getting hurt. But agar, for example, if the first boy throws the ball with very high velocity, then if the same ball is catched by the second boy, then automatically his hands gets hurt. He feels difficulty in catching the ball. So that means here in both the case, ball moves between the two boys. But in the first case, boy feels happy or easy, but second case, boy feels difficult to catch the ball. Reason is, here the motion of the ball not only related with mass of the ball here, it is also related with velocity. If less velocity, then he feels happy. If more velocity, then he feels difficult to catch the ball. Understood na? So that is why, so motion is here depends on two things. One is mass of the ball and second thing is velocity of the ball also. And similarly one more also. For example, there is a glass pane. Okay, glass plane. So two stones dropped from same height. Two stones dropped from same height. One stone small in size, very small. Another stone is large in size. But both are dropped from same height. So what happened? When small stone hit the glass pane, it will not broken, it will be safe. But from same height, if a large stone is dropped on the same glass pane, that glass will break. So here in both the case, we are dropped from same height. Means while reaching the two stones, the glass pane, while they are reaching the glass pane, two stones attain same velocity. दोनों स्टोन का वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन स्मॉल स्टोन की वजह से ब्रेक नहीं हो रहा, लार्ज स्टोन की वजह से ब्रेक हो रहा. अंडरस्टूड माय पॉइंट? स्मॉल स्टोन की वजह से ब्रेक नहीं हो रहा, लार्ज स्टोन की वजह से ब्रेक हो रहा. इसका मतलब मास आल्सो इंपॉर्टेंट हियर. More mass body has more momentum if velocity is constant. That is why linear momentum, it is defined as product of mass and velocity. It is defined as product of mass and velocity. So linear momentum P bar, it is a vector quantity.
mass into velocity v bar. So it is a vector, momentum is a vector quantity. Its direction is along velocity direction, इसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में रहेगा बॉडी का, वही डायरेक्शन पे मोमेंटम रहेगा. So momentum direction is in the direction of velocity only. So units, if you see units, तो CGS unit बात करें तो CGS unit is gram centimeter second inverse, because mass unit is gram, velocity unit is centimeter second inverse, and SI unit is RMKS unit. SI unit is kilogram meter second inverse. Kg meter second inverse is the SI unit for momentum. So this is about the momentum concept. So momentum means both are important. Mass also important, velocity also important. So same mass balls लेके हम different velocities से project करें तो बताया less velocity ball easily catch कर सकते, more velocity ball catch करना difficult रहेगा. But same height से two different stones, small stone, large stone drop करे तो large stone के वजह से glass break होता बोले ना. So that one. Now come to the next point, that is Newton's second law. Newton's second law. Newton's second law. So actually what is Newton's second law? Remember, statement of Newton's second law is the rate of change of momentum, is directly proportional to external force acting on it. Is directly proportional to external force acting on it. Rate of change of momentum is directly proportional to external force acting on it. Okay na? So now what we can write here, F external is proportional to dP by dt. Rate of change of momentum we can express it as dP by dt, d by dt of P. Or we can also write it as F external proportional to final momentum mv minus initial momentum mu by t. Like this also you can write. You can write final momentum minus initial momentum. Here P final is equal to mv, P initial equal to mu. Okay na, final momentum minus initial momentum by time taken. But from derivation, so this proportionality constant is 1 from repeated experiments, okay, says that F external is equal to, so here proportionality constant is 1. So automatically F external is equal to what happened? F external is equal to mv minus mu by t. Okay na? This is the formula. Or we can write m into v minus u by t. But एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट बताया आपको, शायद आपको
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल के एक पॉइंट एक्सेलरेशन के टाइम पे बताया मैं, आइडिया रहेगा आपको कि प्रीवियस क्लासेस देखे ना आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बताया, और v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी बोल के, और v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी होता, सो t इज इक्वल टू क्या होता, v minus u by t is nothing but a, v minus u by t is nothing but a, so that is why I am replacing this v minus u by t is equal to a, so that is why ma it is, this v minus u by t is equal to a, that means ma, okay now. So from this what we are derived here, f is equal to ma we are derived, F is equal to ma, mass into acceleration is nothing but force, F is equal to ma, note down these points. Then one point I want to express here, that is, just I will give that point, impulse is nothing but change in momentum, just remember that, impulse is nothing but change in momentum, impulse is equal to change in momentum. Remember, impulse is nothing but change in momentum, that is mv minus mu, change in momentum means mv minus mu, that is equal to force into time, okay na. What is the unit for impulse? So impulse is vector, impulse is vector, its direction is along force direction, along force direction or change in momentum direction. Unit is Newton second, because yesterday फोर्स यूनिट बताया, प्रीवियस क्लास में फोर्स यूनिट बताया हम न्यूटन बोल के, सो फोर्स इंटू टाइम मीन्स न्यूटन सेकंड और डाइन सेकंड, सीजीएस सिस्टम है तो डाइन सेकंड, यूनिट इज न्यूटन सेकंड इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, ओके ना, और डाइन सेकंड यू कैन यूज. इंपल्स मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं हम, ओके, चेंज इन मोमेंटम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं, एंड यूनिट इज न्यूटन सेकंड इन एसआई सिस्टम, ओके ना. सो दिस इज अबाउट impulse concept. Then we will go to Newton's third law. Newton's third law. Newton's third law. न्यूटन्स थर्ड लॉ. इम्पल्स का एप्लीकेशंस हम 11th स्टैंडर्ड में और अच्छा एप्लीकेशंस आएगा, ओके, जस्ट लाइक आप क्रिकेट मैच में देखते ना, व्हेन फील्डर कैचिंग ए बॉल he draws the hands backward. Why he draws the hands backward means he increases the time of action. You know, time को increase करते हैं, टाइम को increase करे तो फोर्स डिक्रीज होता, क्योंकि बॉल को स्टॉप करना है, सर्टेन वेलोसिटी से बॉल आ रहा, सर्टेन वेलोसिटी से बॉल आ रहा, उसको स्टॉप करना है, बोले तो फाइनल वेलोसिटी जीरो. तो मोमेंटम, बॉल को स्टॉप करने के लिए जो मोमेंटम चेंज है सेम रहेगा,
लेकिन उसमें हम टाइम ऑफ एक्शन इंक्रीज करें तो फोर्स कम हो जाता, इसलिए हमको हैंड सेफ रहता। तो इसलिए कोई भी बॉल कैच कर रहा तो दे ड्रॉ द हैंड्स बैकवर्ड टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एक्शन सो दैट force on the hands will decrease, so that is why he can able to catch the ball safely. Otherwise what happened, तो एक ही जगह पे हैंड्स रख के टक सडनली कैच करे समझो, तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंड, सो दैट विल अफेक्ट द हैंड्स, सो नेक्स्ट टाइम से क्रिकेट छोड़ देते हैं, अच्छा रहता ना। ओके, सो दैट इज वाई, सो ड्रॉइंग द हैंड्स बैकवर्ड इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। Now come to the next point, that is Newton's third law. Impulse का और एक एग्जाम्पल भी आपको 11th में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन हाइट से टू पर्सन सेम हाइट से, एक वॉल में से दो पर्सन जंप कर रहा समझो, तो एक पर्सन का नीचे थोड़ा सैंड था, फ्लोर सैंड, दूसरा पर्सन के नीचे वो सीमेंटेड स्मूथ सीमेंटेड फ्लोर। तो जनरली हम क्या सोचते हैं, वाइजर पर्सन है तो क्या सोचते हैं, हम सीमेंट फ्लोर पे जंप करें तो सेफ रहता बोल के। लेकिन एक्चुअली क्या होता, फॉर एग्जांपल पर्सन जंप हुआ तो सीमेंट फ्लोर में जंप करे तो क्या होता, सडनली ही बिकम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट, तो इमीडिएटली ही कम्स टू रेस्ट। ऐसा जंप होते ही रेस्ट को आ जाता, क्योंकि वहां पे सीमेंट फ्लोर मूव नहीं होता, पेनेट्रेट नहीं होता, फिक्स रहता। तो उसके वजह से टाइमलेस इंपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा उनके ऊपर। ओके, दूसरा पर्सन जो सैंड में जो जंप करें, उन्हों क्या होता, जंप होते ही थोड़ा अंदर पेनेट्रेट होता, क्योंकि सैंड लूज रहता ना, इसलिए ही पेनेट्रेट इनसाइड। तो व्हेन ही पेनेट्रेट इनसाइड, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, टाइम ऑफ एक्शन इंक्रीज होता, टाइम इंक्रीज होने की वजह से फोर्स कम रहता। इसलिए सर्टेन हाइट से हम जंप करना बोले तो नीचे फ्लोर कैसा है देखना पड़ता। अगर सीमेंटेड फ्लोर है तो सजेस्टेबल नहीं है, सैंड फ्लोर है तो थोड़ा सजेस्टेबल है, हाइट कम रहे तो। बहुत हाइट से जंप नहीं करना देखो। ओके, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फॉर एवरी action there is an equal and opposite reaction, for every action there is an equal and opposite reaction, means थर्ड लॉ के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो एक्शन एक्ट्स ऑन वन बॉडी, रिएक्शन एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी। एक्शन एक्ट्स ऑन वन बॉडी, रिएक्शन एक्ट्स ऑन अनदर बॉडी। दोनों एक ही बॉडी में एक्ट नहीं होता। बोले तो हम एक बुक को टेबल पे रखे, वी आर प्लेस्ड ए बुक इन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, तो वेट ऑफ द बुक टेबल पे एक्ट होता डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बुक टेबल पे एक्ट होता डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बुक टेबल पे एक्ट होता डाउनवर्ड, दैट इज एक्शन। टेबल क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बुक में अप्लाई करेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन पे, उसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं हम, we call it as a normal reaction also. Equal and opposite reaction acts on the book, okay ना। तो like that both should not act। यहाँ पे एक्शन टेबल में अप्लाई हुआ, बुक वेट टेबल में अप्लाई कर रहा हूँ, रिएक्शन बुक में अप्लाई हो रहा, टेबल बुक में अप्लाई कर रहा रिएक्शन को, ओके ना। सो दीज टू आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वेट ऑफ द बुक डाउनवर्ड रहता एक्शन, टेबल जो रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो अपवर्ड रहता है रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन। एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, इसलिए बताया मैं, ओके ना, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। कल एक पॉइंट बताया हम, बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा, तो बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा तो
सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होने के टाइम पे बॉडी पे टू फोर्सेस एक्ट होता बोले, एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों सेम बॉडी में एक्ट हो रहा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा। सो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स and centrifugal force are not action reaction pairs, because both are acts on same body, इसलिए they are not considered as action reaction pairs. Action reaction pairs बोले तो they act on different bodies, तो action एक बॉडी में अप्लाई होना, reaction दूसरा बॉडी में अप्लाई होना। Like that so many examples we have. For example, bird is flying, so bird pushes the air down with the wings, and air provides an equal and opposite reaction on the bird, इसलिए bird ऊपर lift होता। ओके ना, अगर आप लोगों को भी हवा में लिफ्ट होना बोले तो आपका हाथ में विंग्स अच्छा वाला पक्का विंग्स अटैच करो, कभी कभी दिखाते रहते हैं वो विंग्स से, अगर आप कोशिश करें तो चांसेस आर देयर टू फ्लाई। ओके ना, लेकिन आपका बॉडी थोड़ा लाइट रहे तो फ्लाई होने का चांस रहता, लाइटर रहना बॉडी। ओके, वेट ज्यादा रहे तो फ्लाई होना मुश्किल होता, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड such a high force on the air, okay na, to lift up. So this is about Newton's third law. Newton's third law applications और भी है, for example when we are walking on a ground, so we push the ground backward with the foot, ground को हम backward push करते हैं, तो ground provides an equal and opposite reaction to you, that is why you can able to walk. Okay na, so that is the reason for walking. Similarly boating करने के टाइम पे, swimming करने के टाइम पे भी यूज करते हैं। बोटिंग में आप देखे होंगे, सो वैसा वाटर को बैक पुश करते हैं so that boat will move forward. Similarly वाटर में स्विमिंग करने के टाइम पे हैंड से हम क्या करते हैं, वाटर को बैक पुश करते हैं, तो वाटर को बैक पुश करे तो हमारा बॉडी फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा, सो दैट इज एक्शन रिएक्शन। सिमिलरली गन एंड बुलेट सिस्टम भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। अगर गन से हम बुलेट को फायर करें, बुलेट फॉरवर्ड ट्रैवल करेगा, दैट इज एक्शन, गन बैकवर्ड ट्रैवल करेगा, दैट इज रिएक्शन। ओके ना, like that so many examples we can give for action and reaction pairs. Okay, so many examples we can give. Now come to the law of conservation of linear momentum concept here. Law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. So law of conservation of linear momentum, if no external force acts on the system, then total momentum of system remains constant in any direction after any number of collisions. Okay, in any direction after any number of collisions. So law of conservation of linear momentum statement और एक बार देखो,
if no external force acts on the system, F external 0 रहना, बाहर से कुछ भी force apply नहीं होना यहाँ पे, F external 0, internal force possible है, internal force रहे तो भी चलेगा, but which is not present, external force नहीं रहना. If no external force acts on the system, the total momentum of the system remains constant in any direction after any number of collisions. Okay. So, in this case what we can consider here is, so law of conservation of linear momentum का एक simple derivation हम देखेंगे. For example, this is body of mass m1 moving with u1 velocity, and this is body of mass m2 moving with u2 velocity, and consider here u1 is greater than u2. u1 is greater than u2. तो यहाँ पे u1 is greater than u2 बोले तो u1 is greater than u2 बोले तो certain time के बाद definitely m1 body m2 body को आके hit करेगा, क्योंकि they are travel in a same straight line. So इसलिए after certain time क्या होना चाहिए? So m1 and m2 bodies get hit. After collision takes place, m1 moves with velocity v1 and m2 moves with velocity v2 after collision. So this is collision. तो collision के बाद how they are traveling, let us see. So here I am considering two masses, m1 and m2. m1 is moving with u1 velocity and m2 is moving with u2 velocity. But u1 greater than u2, because of that certain time के बाद definitely m1 hits m2 in the same direction. m1 hits m2. So m1 is moving with v1 velocity after collision, m2 is moving with v2 velocity after collision. Now one important concept from Newton's third law of motion, okay, Newton's third law of motion. So I think you are written the simple concept. Newton's third law of motion, m1 applies force on m2, that is action. Action, that is m1 applies on m2. That is equal to minus reaction, that is m2 applies on m1. m2 applies on m1. यहाँ पे m1 m2 को हिट करे तो ड्यूरिंग द हिट, सो m1 m2 को हिट करे तो ये डायरेक्शन पे एक्शन रहेगा, ओके ना. बट m2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स m1 में अप्लाई करेगा, सो दैट इज रिएक्शन. सो फोर्स एक्शन देखो अभी, फाइनल मोमेंटम m1 v1 minus m1 u1, that is change in momentum by delta t, that is action. Change in momentum, final momentum of first ball minus initial momentum of first ball by delta t collision time, that is action. Force, change in momentum by time is nothing but force, that is action. ओके ना. फिर रिएक्शन को आ गया तो माइनस रहने दो, तो फाइनल मोमेंटम m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, that is change in momentum by time, nothing but reaction, minus sign because of Newton's third law. So cancel this delta t in both the cases. So finally you can rearrange the terms, implies. So bring this m1 u1 to this side, m1 v1, this minus m2 v2 will bring to that side, plus m2 v2 is equal to this minus bring to this side, plus m1 u1
plus m2 u2 because this minus into minus plus. So, this see here, this is the total momentum before collision, this is the total momentum after collision. Here no external force is acting. तो m1 में m2 में किसी में भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा. दे आर मूविंग विथ u1 u2 वेलोसिटीज. u1 ज्यादा रहने की वजह से इट मेक्स कोलिजन विथ m2. सो कोलिजन के टाइम पे फर्स्ट वन सेकंड में फोर्स अप्लाई करेगा, सेकंड फर्स्ट में फोर्स अप्लाई करेगा. दोनों मासेस को हम एक सिस्टम बताया, यहां पे दोनों मासेस मिला के एक सिस्टम बताया हम. तो ये सिस्टम में m1 m2 में जो फोर्स अप्लाई कर रहा दैट इज इंटरनल ओनली. m2 m1 में जो अप्लाई कर रहा वो भी इंटरनल, बट एक्सटर्नल से कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा. ओके, दैट इज व्हाई टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, total momentum after collision is equal to total momentum before collision. So this is the formula generally we are used in case of conservation of linear momentum. This is the formula we are generally used in case of law of conservation of linear momentum. Okay ना? So two bodies case में ये formula ज़्यादा use करते हैं. We are used number of times. Okay ना? Law of conservation of linear momentum. So law of conservation of linear momentum के बाद उसका applications देखेंगे हम. Applications. So application part को आए तो, so first one I am considering applications में first one. So I think this Newton's third law you are written ना. तो so many examples बताया Newton's third law के लिए. आप उसमें bird is flying also comes under Newton's third law. Bullet is fired from a gun, न्यूटन्स थर्ड लॉ. देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर डिपेंड होके जेट प्लेन, मोशन ऑफ ए जेट प्लेन, मोशन ऑफ ए जेट प्लेन इज एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके ना? सिमिलरली रॉकेट प्रोपल्शन आल्सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है उसमें. रॉकेट में भी, रॉकेट प्रोपल्शन में भी, रॉकेट में क्या होता है, गैसेस नोजल से पीछे मूव होता, बैक साइड. ओके, दैट इज एक्शन. जो रॉकेट आगे चले जाएगा दैट इज रिएक्शन. ओके ना, लाइक दैट. देन वी विल गो टू द एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेगा लेकिन हम लिमिटेड यहाँ पे बताएंगे क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे आप सीखना पड़ेगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 11th स्टैंडर्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस. ओके, सो एप्लीकेशंस पार्ट को आया तो एप्लीकेशंस. ओके, सो बुलेट एंड गन सिस्टम वी कंसिडर्ड. सो बुलेट एंड गन सिस्टम, bullet and gun system. Okay, so generally how we can apply this conservation of linear momentum in the case of bullet and gun system. For example, I am considering this is a gun and generally, so this gun fires a bullet. If this gun fires a bullet, okay, this is gun, this is bullet. Okay, if this gun fires the bullet,
So let small m be the mass of the bullet and capital M be the mass of the gun. मास ऑफ द गन प्लेस में कैपिटल एन ले लो, मास ऑफ द बुलेट को स्मॉल एम ले लो. ओके, मास ऑफ द बुलेट इज स्मॉल एम एंड मास ऑफ द गन इज कैपिटल एम. सो बिफोर firing bullet is at rest and gun also at rest. So m1 u1 plus m2 u2 equal to 0, or mass of the gun into velocity of the gun plus mass of the bullet into velocity of the bullet. दोनों वेलोसिटी 0 रहने की वजह से 0, दोनों का वेलोसिटी 0 रहने की वजह से 0. टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द बुलेट. आफ्टर फायरिंग द बुलेट, after firing the bullet, after firing the bullet, total momentum 0. Because after firing the bullet, यहाँ पे बुलेट से गन पे बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट हम ट्रिगर दबाए तो अंदर जो स्प्रिंग रहता, ये गन के अंदर जो स्प्रिंग रहता, दैट स्प्रिंग हिट्स द बुलेट सो दैट बुलेट मूव्स फॉरवर्ड. तो इसकी वजह से बाहर से अब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, गन के अंदर स्प्रिंग मूव हो रहा. बोले तो इंटरनल फोर्स ओनली. गन एंड बुलेट को एक सिस्टम कंसिडर करें तो, गन एंड बुलेट को एक सिस्टम कंसिडर करें तो गन बुलेट में फोर्स अप्लाई कर रहा, तो ऑटोमेटिकली बुलेट आल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. आफ्टर फायरिंग द बुलेट टोटल मोमेंटम इज आल्सो 0. बोले तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दैट recoil velocity of gun, recoil velocity of gun, recoil velocity of gun, okay, recoil velocity of gun. So गन का recoil velocity बात कर, recoil बोले तो ऑटोमेटिकली बैक साइड बोल के, मूविंग बैक साइड. ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू minus mass of bullet into velocity of bullet. Then from this, what is velocity of gun? Velocity of gun is equal to minus mass of bullet into velocity of bullet by mass of gun, by mass of gun. So recoil velocity of gun, recoil velocity, recoil बोले तो नहीं, no need of recoil velocity means no need of negative sign, negative sign का जरूरत नहीं है. recoil means traveling back. So that is why mass of bullet into velocity of bullet by mass of gun. By using this formula, you can calculate the recoil velocity. You can calculate the recoil velocity by using this formula. Similarly, one more simple application I will explain. I think law of conservation of linear momentum आप लिखे होंगे. So are you written this? Next one, a bomb at rest explodes into two pieces. Then ratio of their velocities is
A bomb at rest explodes into two pieces. So bomb rest में है, that is explodes into two pieces यहाँ पे. So two pieces जैसा explode हुआ तो what happened? So initially bomb at rest. So total momentum before explosion. Total momentum before explosion is 0, because bomb is at rest, it is not moving, so that is why total momentum is 0. okay ना, bomb rest में है इसलिए total momentum 0. okay, so total momentum before explosion is 0. So that is why total momentum after explosion भी 0 रहना, because explosion is an internal force. Explosion is an internal force. It is not external force. So that is why total momentum after explosion also 0 होना. For example, this is capital M. तो explode होके two pieces बन गया. So this is of M1 mass moving with V1 velocity. This is M2 mass moving with V2 velocity. Okay ना? So that is why after explosion M1 V1 plus M2 V2 should be equal to 0 होना चाहिए. Otherwise आपको यहाँ पे M1 M2 दोनों नहीं दिया, इसमें M1 नहीं दिया, तो M2 कैन बी रिटन एज कैपिटल M माइनस M1 ले सकते हैं. ओके ना. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट M1 V1 is equal to minus M2 V2. M1 V1 is equal to minus M2 V2. So that is why V1 by V2 is equal to M2 by M1 minus, because both particles are moving in opposite direction. एक फॉरवर्ड ट्रैवल करे तो एक बैकवर्ड ट्रैवल करेगा एक्सप्लोजन के बाद. ओके ना. सो टोटल मोमेंटम 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, वन पार्ट फॉरवर्ड ट्रैवल कर रहा तो सेकंड पार्ट बैकवर्ड ट्रैवल करेगा, सेकंड पार्ट मूव्स बैकवर्ड. सो M1 V1 is equal to minus M2 V2. So from that V1 by V2 equal to minus M2 by M1 you can get minus M2 by M1. Okay. So like that we have total momentum before explosion 0 रहे तो total momentum after explosion भी 0 रहना चाहिए compulsory, because explosion is an internal force. So after explosion M1 V1 plus M2 V2 equal to 0 होना. From this M1 V1 equal to minus M2 V2 और V1 V2 रेशियो कैसा रहेगा बोले तो M2 by M1. बोले तो लाइटर पार्टिकल का मोर वेलोसिटी रहेगा, हेवियर पार्टिकल का लेस वेलोसिटी रहेगा. अंडरस्टूड माय पॉइंट. लाइटर पार्टिकल का मोर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एंड मास इनवर्सली. सो लाइटर पार्टिकल का मोर वेलोसिटी आएगा, हेवियर पार्टिकल का लेस वेलोसिटी आएगा. अंडरस्टूड ना. सो लाइक दिस वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहेगा. उसमें दो एप्लीकेशंस बताया, एक बुलेट एंड गन सिस्टम का एप्लीकेशन बताया, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फार्मूला डिराइव करें, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन बोल के. सिमिलरली बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स रहे तो आफ्टर एक्सप्लोजन व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, वो भी बताया हम. सो आई थिंक आर यू फॉलोड दिस एप्लीकेशंस आल्सो. और इसके आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेगा, दैट इज इन 12th स्टैंडर्ड, यू कैन that is in 11th standard, you can go through that more effectively.
because if you have this preliminary idea more effectively, then 11th स्टैंडर्ड में जो आपको टीचिंग होता वो टाइम पे आपको थोड़ा इजी होता. ओके, सो व्हाट इज इंटरनल फोर्स, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, उसके बारे में आइडिया रहना. एंड व्हाट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सिंपल एप्लीकेशंस मालूम रहे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस में भी इजी रहता आपको समझने के लिए. ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड दिस क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स. आज जो बताया F इक्वल टू ma रहने दो, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम, conservation of linear momentum, linear momentum applications, okay, and also we will give some other problems also like V equal to R omega related, A equal to R alpha related में भी problems explain करेंगे 1 or 2. okay, okay, thank you students.